हेलो स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चंस हैं और हम इन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है कि फॉर द डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ आर माइनस जीरो टू आर लेट थ्री एफ एक्स प्लस टू एफ वन बाई एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस टेन देन एफ मॉड ऑफ एफ थ्री plus f dash 1 by 4. What is the value of this? So as you know that this is the question of functional, okay, functional equation. So how to solve this? As you know that here in the question fx and f1 by x is given. तो हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम पहले फाइंड आउट करेंगे fx क्या है, और fx में जैसे हमारा fx आएगा तो हम उसका f डैश निकाल लेंगे और हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है फंक्शनल इक्वेशन थ्री एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ वन बाई एक्स इजक्वल टू वन बाई एक्स माइनस टेन। इसमें जो एक्स है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए वन बाई एक्स से, तो ये आपका हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन बाई एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस टेन। ओके, आपको ध्यान रहे हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एफ एक्स को। तो हम यहाँ पर एफ ऑफ वन बाई एक्स को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह से इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर क्या है, टू है। तो हम पहले इक्वेशन में सपोज करो मैंने इसका नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, और मैंने इसको नाम दे दिया आपका लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। लेट्स मल्टीप्लाई थ्री हियर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, and in equation number second multiply by 2. Okay, and what you will get, as you know that this is going to be 6 and this is also going to be 6, and first minus second this get cancelled. Okay, and you will get 3 3 is 9, 9 minus 4 is 5 fx equal to 3 by x minus 2x, and this is going to be 30 minus and minus 30, and this is going to be minus 20. Okay, so basically at the end this is going to be minus 10. Okay, I think it is clear to you. So 3 by x minus 2x and 30 minus 30 and plus 20, that is going to be minus 10. So this is going to be your fx. Okay, so if you can find like fx is going to be fx is equal to 1 by 5 of 3 by x minus 2x minus 10। और यहाँ पर करना क्या, हमें हमें इसका डिफरेंशिएशन भी देखो फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एफ डैश वन बाई फोर भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन लोग, उसके लिए अपन लोग पहले इसको चलते हैं डिफरेंशिएट। चलो इसका एफ थ्री पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक ना। एफ थ्री क्या होगा, तो इसका एफ थ्री क्या होगा, वन बाई फाइव। ओके, सो थ्री रखेंगे, थ्री थ्री वन माइनस थ्री टू सिक्स माइनस टेन, और ये आपका हो जाएगा 10 ये हो जाएगा 16 माइनस 16, और ये आएगा प्लस वन, सो माइनस 15, एंड इट इज गोइंग टू बी माइनस 3। ओके, लेट्स फाइंड द एफ डैश फोर, एफ डैश फर्स्ट फाइंड आर एफ डैश। ओके, एफ डैश एक्स इज गोइंग टू बी 1 by 5 and minus 3 by x square minus 2, and constant is going to be 0, and we have to find the fx for the x is equal to 1 by 4. Okay, so let's find the f dash x 1 by 4. F dash 1 by 4 is going to be 1 by 5 and minus 3 multiplied by 1 by 4 square, that is 16 minus 2, and if you solve this you will get minus 10. Okay, now we have to add these two as it is given in the question, add these two and find the mod of that. So that is going to be minus 3 minus 10 mod of this, and that is going to be the 13. Okay, so in this way we have solved this question, and this question is not so much difficult. Okay, mainly you should have the knowledge of
functional equation, and if you have that, you can solve it very easily. Okay, so for that you should have the knowledge and information of the functional equation, solve that and get the answer. Okay, so this is very important question and not so much difficult. Okay, I don't think it is difficult. It is moderate level question. Okay, so if you have basic things in your mind, you can solve this question easily. Okay, so let's take some other questions of the differentiation, and question is just given in front of you. Let's read the questions and try to understand it. Question is given: y is equal to log of 1 minus x square divided by 1 plus x square. X is lying between minus 1 to 1, and at x is equal to 1 by 2, the value of 2 to 5 y dash minus y double dash is equal to. So first purpose is to find the y dash and then y double dash. Okay, so what is the y dash? Y dash is equal to, this is log x. Okay, so I think you can take the help of some log m by n also. You can apply log m by n also, or you can, that's also possible. Okay, so 1 by log x is 1 by x, so it is going to be 1 plus x square divided by 1 minus x square, and then differentiation of this fx by gx. So differentiation of the numerator 2x 1 plus x square minus differentiation of the denominator multiply by numerator divide by 1 plus x square and then whole square. I think it is clear to you. Okay, one is get cancelled with this. Okay, so if you solve this, you will get minus 2x minus 2x cube minus 2x, and this is going to plus 2x cube, plus minus get cancelled, and you will get minus 4x. So at the end, y dash is going to be minus 4x divided by 1 plus x square. Okay, this is your y dash. Now we have to find the y double dash, and that is going to be, take the minus 4 outside, and you will get 1 into 1 plus x square minus x of into 2x divided by 1 plus x square and the square of that. Now let's solve it and you will get the answer, that is minus 4 multiply by, this is 1, so constant is 1. Okay, 1 minus 2x square and x square, it is minus x square. Okay, divided by 1 plus x square and then whole square. We have to keep in mind that we have to find the values of these differentiation, first order differentiation and second order at x is equal to 1 by 2. Okay, so let's suppose I am just directly putting the value 1 by 2 here also. Okay, so I am putting the value y dash 1 by 2, and that is going to be, let's put here minus, put 1 by 2 here, 1 4 multiply by 1 by 2, that is minus 2, plus 1 by 4, and that is going to be minus 8 by 5. Okay, so this is the value of y dash at 1 by 2. Okay, now if you minus 4 multiply by, let's put 1 by 2 here, so 1 minus 1 by 4, that is 3 by 4, and if you put this again here 1 by 2, so 1 by 4, 5 by 4 and square of that. Okay, so this is going to be what, let's solve it. Minus 4, 3 by 4, 4 multiply by 4 divided by 5 multiply by 5, 4 and 4 get cancelled, and you will get minus 48 by 25. This is the y double dash. Now let's uh, come to the questions, main part of the question. 225 into y dash minus y double dash. So question is 225 y dash minus y double dash, and 225 y dash is minus 8 by 5, and y double dash is
minus minus plus 48 by 25, and this is going to be 225 divide by 25 multiply this is 5. Okay, so 5 5 to 25, so 40. Okay, I think you are getting all these things, so multiply by 8 here, and if you solve these two, what you can get? You can get, I think it is going to be 9 times, 9 times or something more. It's 9 times, okay, because 10 times is 250, so 9 times 9, okay, 9, and 9 8 ja 72, so answer is coming 72. Let me just see the questions once again. 1 by 2 and value of 225 y dash minus y double dash. Okay, so in this way you can solve it. Okay, it's very easy, not so much difficult, so these questions are very easy. Only there are some little calculation, and I hope that this calculation is not so much lengthy also, you can understand it very well. And this was easy question. Okay, don't say that it is difficult or any rocket science, very very easy questions, and I hope that these basic question you should know it. Okay, so this way we have solved minus 8 by 5, and okay, so overall is it is right. Okay, if still you have doubt, you can ask me and I can explain that things once again. Okay, so let's go for the next question and we find the answer of that question. Okay, and all these questions are very good question. Okay, and I have chosen these questions from different from the pyqs, and I thought this question could be better for you for your understanding, and I mainly have chosen the questions which has multiple concept behind that, and you can learn much more things. So let's try to understand it. And if you observe the question is saying log y is equal to 3 sine inverse x, then 1 minus x square y double dash minus x y dash at x is equal to 1 by 2. ओके, सो x इक्वल टू 1 बाई 2 पे हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको y डैश पे चलते हैं। y क्या है इस पर पहले हम सोचते हैं ना, इसको पहले देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा मिलेगा 1 बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स विच मीन्स वाई डैश 3, और साइन इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आपका मिल गया वाई। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या कोई रास्ता इसमें दिख रहा है? इसको आप ऐसे लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस इंटू वाई डैश इक्वल टू 3 वाई। ओके, और इसको अब आप क्या करिए कि अगर आप इसको थोड़ा सा इसमें अगर आप देख रहे हैं कि इसमें इसके हिसाब से हमें चलना है, ठीक है ना, इसके हिसाब से चलना है तो अच्छा होगा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो कैसा होगा, अच्छा होगा मेरे हिसाब से। और स्क्वायर करना शायद मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर हो सकता है। चलो हम इसका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। ओके, दोनों तरफ अगर हमने स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, देखते हैं क्या होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 9 वाई स्क्वायर। नाउ हमको चाहिए वाई डबल डैश, तो अब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें हम यूज करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ओके, सो ये होने वाला है माइनस 2x वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 वाई डैश, और आपके पे y का भी होगा तो हो जाएगा वाई डबल डैश इक्वल टू 18 वाई डैश। कीप इन माइंड y dash and this y dash get cancelled, and you will get 1 minus x square y डबल डैश, एंड ये आपका होने वाला है क्या, ये आपका माइनस 2xy। okay, so one thing that we have to keep, so one thing we can do here, that is 2 here ना, it is 2, so 2 भी लिख लेते हैं, माइनस 2x
y dash is equal to 18y. Now if you just focus here, 2 is common, take to 2 is common, 1 minus x square y double dash minus xy dash is equal to 9y. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 9y. सो इसको हम लोग गहराई समझ लेते हैं. ये पूरी चीज हमारी जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये सारी की सारी चीज, ये जो चीज है, ये पूरी पूरी इक्वल 9y और x इक्वल टू 1/2 है. y की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से हम देखते हैं, इसका हेल्प लेते हैं. इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं log y. सो log y गिवन दैट x इक्वल टू 1/2. सो जब आप रखेंगे 1/2, कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2 पाई बाई 6, और ये आपको हो जाएगा पाई बाई 2, बिकॉज पाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3, so पाई बाई 2. So y is equal to e to the power pi by 2 is going to the value of y. ओके, सो ये वैल्यू जो आपको आ रही है, इसको आप रख देंगे यहाँ पर. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. ओके, so basically now this is going to be 9 times of y. Y is what? E to the power pi by 2, and that is going to be your answer. ओके, सो ये क्वेश्चन जो आपका था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था. इसमें अगर आपने थोड़ी सी भी डिफरेंशिएशन करने में गलती कर दी, तो क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा और हो सकता है कि टफ भी हो जाए. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना है कि हमको इसको मल्टीप्लाई करना है. आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि वाई डैश आ गया, अब आप वाई डबल डैश यहाँ से निकालें और फिर सॉल्व करें, वो लेंदी हो जाएगा. आपको ऐसे करेंगे, ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से होगा. ऐसे जाना है, फिर स्क्वायर करना और फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देना है, और बस आपका आंसर आ जाएगा. ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, समझिए, और आप में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो आप पूछ सकते हैं. आपके कोई भी क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं. ठीक, तो ये मेरा रहा आज के लिए. हम अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे कुछ खास क्वेश्चंस के